Hello and welcome again. This is day 94 of my 365 days streaming challenge, where I'll be streaming for 365 days without thinking about the results basically. And this is day 94. And as always, this one is to be some sort of productive stuff, and then we'll move on to like the fun stuff afterwards. At least for 1 hour, we'll be like working on something productive, and this time I've chosen to go with the video editing process because like I have a lot of videos on my storage hard drives and SSDs basically, but I need to like clear them. Like I'm currently editing a 1-year-old video which I had recorded with the purpose in mind that I will be uploading at like in a few weeks or something, but it's still sitting there in my SSD. So yeah, I decided to like clear them all. So recently I uploaded one of the video. I'm like quick editing everything right now, so it's not going to be like super interesting editing. So like my goal right now is to like completely edit all the videos as fast as possible and upload them so that I can clear some storage and record gaming benchmarks and stuff. And I have a lot of games right now that I need to record benchmark with, but the problem is I don't have enough storage for them. So that's why I'm clearing a lot of storage, and so that I can like upload some benchmark videos online, and maybe that would be helpful for everyone around the world, most people at least, and perhaps to even me. I'm not sure at the moment, but hopefully. And I guess we will start with that and then eventually figure out everything else. And by the way, if you're watching this on Twitch, please make sure to follow. I'm trying to like reach the 50 followers goal that I have right now, as you can see on my screen over here, by the end of the year. So that would be like around 30 days, which is the requirement for joining the affiliate. Also, I don't have 3 viewers. I think, I don't know how they measure it, but I also need 3 simultaneous viewers, which also I don't have. I have only 1 at the moment, but I think that should be easier if we get to like 50 followers. So the first thing is to like reach 50 followers, I guess, but within 30 days. So the problem is like, for example, I have 13 followers right now, but in last 30 days I have only 12, to be honest. So yeah, I need about 38 followers in next few days basically. What's the date today? Okay, 6th December. So I don't have a lot of time basically. In December 30 probably. So I need 50 followers by December 30. If I want to like achieve 50 followers in 30 days basically. Achieving 50 followers would be easy, but achieving 50 followers within 30 days would be a challenge, which I'm trying to achieve, but I'm not sure if it will happen or not. Okay, that's beside the point. Let's move on to our work basically. I will pause the video previews over here from Twitch and YouTube. I've opened the video on my side like preview on my laptop, managing this stream manager. Sorry, I'm fumbling a lot. It's a normal thing for me. Launching my video editor, I don't even remember which editor I was using. I used like both that I have, Filmora for basic stuff and AI stuff, and then I go to like DaVinci Resolve for advanced stuff. So right now, let me switch the window to
resolve. Okay, so right now I'm working on this, like it's at least a year-old video that I had, and this is the final cut process. If you like remember, if you have watched this series basically where I'm editing, then I have explained how my editing process moves through phases. So this is the final cut phase right now. So I'm like trimming as much as possible content to make it as fast as possible, the video, and also to make it as efficient as possible, so no flops and stuff. Unless it like breaks the rhythm of the video or something, I will like delete almost everything. So that's the process I'm going through right now. And at the moment I will be using my shortcut keys that I've set. I don't remember the default keys for this, you have to look for it. Basically I'm using Q and W to cut the files, the timeline. वो 3 to 4 hours की बैकअप दे देगा इजीली, जो कि चाहिए नहीं, बस 5-10 मिनट के लिए चल जाए बहुत है, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी उतनी जाती नहीं है अनलेस की कुछ खराब हो जाए। जीरो लैग स्विचिंग, जैसे कि 3 आउटपुट देख सकते हो आप यहाँ पे, 12 वोल्ट 2 एम्पियर, 9 वोल्ट 1 एम्पियर, 5 वोल्ट 1 एम्पियर। तो और यूएसबी आउटपुट भी है जो मैं रास्पबेरी पाई पे टेस्ट करूंगा, अगर काम करता है तो। काम करता है तो बढ़िया है, वैसे वो हमेशा ऑन रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि बैकअप डीएनएस काम करता है तो बढ़िया है, वैसे वो हमेशा I think I can cut from here, but let's figure out if that's possible. करता है तो काम करता है तो बढ़िया है, वैसे वो हमेशा ऑन रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि बैकअप डीएनएस सर्वर मैंने ऑनलाइन वाला गूगल का या क्लाउडफ्लेयर का इस्तेमाल कर रखा है। तो अगर वो ऑन नहीं रहती है तो सीधे सीधे क्लाउडफ्लेयर से ले लेती है बेसिकली। मेक इन इंडिया, आई डोंट नो, क्लाउडफ्लेयर से ले लेती है बेसिकली। So I can cut until here, but the thing is I was showing the box, so I don't know. Let's do it I guess and check if things अगर काम करता है तो बढ़िया है, वैसे मेक इन इंडिया। Okay, slightly harsher. Let's go here and increase this one a little bit on this side. And again delete this, check करता है तो बढ़िया है, वैसे मेक इन इंडिया। Okay, right now I'm thinking like keeping all this, the complete sentence, sorry, word that I have over here. वैसे वो हमें we cut from here. वो हमेशा ऑन रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि बैकअप डीएनएस सर्वर मैंने ऑनलाइन वाला गूगल का या क्लाउडफ्लेयर का इस्तेमाल कर रखा है। तो अगर वो ऑन नहीं रहती है तो सीधे सीधे क्लाउडफ्लेयर से ले लेती है बेसिकली। मेक इन इंडिया। So I'm explaining how I use my Raspberry Pi, which is not necessary for this video, so that's why this can be removed. तो काम करता है तो बढ़िया है, वैसे मेक इन इंडिया, आई डोंट नो ये इंडिया। I only wanted to keep that part because I was like rotating the box and showing all parts of it. करता है तो बढ़िया है, वैसे मेक इन इंडिया, आई डोंट नो ये इंडियन, कंप्लीटली इंडियन प्रोडक्ट है। इंडिया, आई डोंट नो ये इंडियन, कंप्लीटली इंडिया, आई डोंट नो ये। I think I can cut from here. Indian, completely Indian. And cut from here, and it would still India, make sense. I don't know ये completely Indian product. In India, I don't know ये completely Indian product है या नहीं, but since it's sounding a little bit disrupting, let's check it with audio transition over here. I don't know ये completely Indian product है या नहीं. Okay, I think I can cut one frame here. I will be moving the frame. In India, I don't know ये completely Indian product है.
इन इंडिया आई डोंट नो ये completely इंडियन प्रोडक्ट है या नहीं. I think it's working. I just only need to crossfade this audio. I don't know ये completely इंडियन प्रोडक्ट. Maybe -3 dB will work. Let's see. I don't know ये completely इंडियन प्रोडक्ट. So how about we do this over here and with also. Okay, I think only one thing will work. I don't know ये completely इंडियन. So okay, let's go with 0 dB again, but this time let's try to stretch it a little bit and see what happens. In India, I don't know ये completely इंडियन प्रोडक्ट है या नहीं, but ये completely इंडियन प्रोडक्ट है. Okay, not bad, but not good either. India, I don't know ये completely इंडियन प्रोडक्ट है. Let's try with -3 dB, but again, let's stretch it a little bit. In India, I don't know ये completely इंडियन प्रोडक्ट है या नहीं, but It's fine, but not good enough. What is this? Power backup for router. Yeah, I don't know ये completely इंडियन प्रोडक्ट. Maybe let's do this only and see what happens. Yeah, I don't know ये completely इंडियन प्रोडक्ट है. Okay, this would work actually. Sorry, not. Let's create a little bit of curve over here by selecting the start. In India, Hi, Aditya, I don't know कैसे ये हो? completely इंडियन प्रोडक्ट है. The only problem is it still sounds like a little bit I don't know ये completely इंडियन प्रोडक्ट है. abrupt. So let's keep the cut, I guess. The mistake, I think it's fine. In India, I don't know ये इंडियन completely इंडियन प्रोडक्ट है या नहीं, but I think इंडियन कंपनी है, प्लस इंडिया में ही बनाते हैं. चंडीगढ़ या पंजाब बेस्ड है. कैपेसिटी 24.3 watt hour, बैकअप 3 to 6 hours, 3 hours के आसपास मिलेगी मेरे हिसाब से. एक करंट है 2 एम्पियर. एक्चुअल बैकअप टाइम विल बी. और बाय द वे मैं इसीलिए कह रहा था ये 2 एम्पियर मैक्स. कैसे हो भाई, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है? आवर्स 3 आवर्स के आसपास मिलेगी मेरे हिसाब से. एक करंट है 2 एम्पियर. एक्चुअल बैकअप टाइम विल एम्पियर. एक्चुअल You can also cut this part. I'm explaining this. I mean, reading this thing. एक्चुअल बैकअप टाइम विल बी. और बाय द Yeah, I can cut this as well. एक करंट है 2 एम्पियर. और बाय द वे मैं इसीलिए कह रहा था ये 2 एम्पियर मैक्स. So if the cut was like smoother like this, then I करंट would है have 2 kept it. एम्पियर. और बाय द वे मैं इसीलिए कह रहा था ये 2 एम्पियर मैक्सिमम सपोर्ट करता है, और रास्पबेरी पाई को फुल्ली फंक्शन करने के लिए प्रॉपर्ली, जो कि मेरी रास्पबेरी पाई 4 है, उसको 5 एम्पियर चाहिए होती है. बट मेरे ख्याल से वो इसमें. Again, I'm talking about my Raspberry Pi, which is unnecessary, but unfortunately, if the cut doesn't line up with the previous cut, then I will have to keep it. और बाय द वे मैं इसीलिए कह रहा था ये 2 एम्पियर मैक्सिमम सपोर्ट. And I just realized that that's the reason why I kept the previous one as well. Otherwise, I would have deleted it like already. Now, this one won't make sense if I keep it, because I haven't explained what I'm doing without keeping the previous part that we removed, basically. So it's a little bit ये confusing. 2 एम्पियर मैक्सिमम सपोर्ट करता है, और रास्पबेरी पाई को फुल्ली फंक्शन सपोर्ट करता है, और रास्पबेरी पाई को फुल्ली फंक्शन करने के लिए प्रॉपर्ली, जो कि मेरी रास्पबेरी पाई 4 है, उसको 5 एम्पियर चाहिए होती है. बट मेरे So I'm talking about again why it won't work for the Raspberry Pi. Okay, let's hear it again so that it would make sense. I don't remember like. हेलो if एंड I'm वेलकम talking अगेन. about कई it or दिनों से not. मैं बात कर रहा था एक मिनी यूपीएस परचेस करने की मेरे लाइव स्ट्रीम वगैरह पे, एंड मैंने वो कर लिया. एक ऑलरेडी मैं यूज कर रहा हूँ, ऑक्टेव करके समथिंग है, तो उसमें सिंगल आउटपुट है. मेरे को लगा था कि डबल आउटपुट होगा, जो कि एक मिस्टेक परचेस थी, बट इवेंचुअली वो मेरे लिए सही परचेस ही बन गई, क्योंकि मेरे को 2 एक्चुअल में चाहिए हुई थी मिनी यूपीएस. तो अभी मेरे पास जो आई हुई है, जो मैंने अभी ऑर्डर करी हुई है, स्टार वॉट का है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो ये 3-in-1 आउटपुट है,
बेसिकली यहाँ पे 3 आउटपुट मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को 2 चाहिए और प्लस एक मेरे पास ऑलरेडी है, जैसा कि मैंने बताया ऑक्टर का सिंगल आउटपुट वाला। तो तीनों मिला के मेरा यहाँ पे सिस्टम बन जाएगा। अगर आप अपने लिए अपने इंटरनेट या राउटर के लिए खरीद रहे हो मिनी यूपीएस, तो याद रखना कि आपको एटलीस्ट 2 आउटपुट चाहिए होगा इन मोस्ट केसेस, क्योंकि आपको आपके राउटर को भी पावर करना है प्लस आपके ओएनयू को भी या ओएनटी डिवाइस जो भी है उसको भी पावर करना है। तो एटलीस्ट 2 तो लगभग सबको चाहिए होगा। एंड अगर सिंगल वाला आउटपुट अगर आप खरीदते हैं तो वो किस केस पे खरीद सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ओएनयू कहीं और पे है और राउटर कहीं और पे है, तो उस केस में फिर सिंगल आउटपुट बेटर होगा और आपको 2 खरीदना पड़ेगा। एंड मेरे केस में मुझे 3 आउटपुट वाला चाहिए था, तो वो इसलिए क्योंकि मेरे पास 3 डिवाइसेस को पावर करने पड़े, मुझे 3 डिवाइसेस पावर करने पड़ेंगे एक साथ। वो इसलिए क्योंकि मेरे घर पे मल्टीपल कनेक्शंस हैं, तो एक नेटवर्क स्विच भी एक्स्ट्रा लगा हुआ है जिसके थ्रू बेसिकली मल्टीपल कनेक्शंस यूज किया जा सकता है। तो इसलिए मेरे पास 3 डिवाइस है, राउटर, ओएनयू और स्विच। तो ये तीनों का ऑन रहना हमेशा जरूरी है बिजली जाने के बाद भी। तो इसलिए मैंने 3 आउटपुट वाला यहाँ पे ऑर्डर करा है। हालांकि यहाँ पे से तीसरा जो आउटपुट होगा वो मैं अपने डीएनएस सर्वर के लिए यूज करने वाला हूँ, जो कि मैं Okay, so I have बनाई हुई है explained where I'll be using, I guess. वो इस्तेमाल करूंगा। एंड साथ ही साथ यहाँ So we don't need the part, I think. वो या तो The राउटर previous one. स्विच को पावर कर रही होगी, और अभी जो अनबॉक्स करने वाला हूँ, अभी जो मैंने ली है वो सिमिलरली बेसिकली 3 डिवाइस को पावर कर रही होगी, जो कि होगी रास्पबेरी पाई। आई थिंक मेरे उसके लिए प्रॉपर पावर सोर्स ये नहीं होने वाली है, आई डोंट नो, मुझे चेक करना पड़ेगा। कम पावर ट्रांसफर करने वाली है एम्पियर के मामले में, बट देखता हूँ अगर काम करती है तो, क्योंकि ऐसे तो मैं सिर्फ डीएनएस सर्वर के लिए यूज कर रहा हूँ, तो आई थिंक चल जाएगी रास्पबेरी पाई, बट मैं 100% श्योर नहीं हूँ। तो देखते हैं। और बाकी राउटर और स्विच वगैरह जो है ओएनयू वगैरह है, वो सब इजिली चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखते हैं कैसा है। ये बेसिकली अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्शन के लिए ट्राई कर रहा हूँ। एक तो ऑलरेडी लगी हुई है जिससे राउटर हमेशा ऑन रहती है, बट मेरे को एक्स्ट्रा और चाहिए थे ताकि ओएनयू स्विच वगैरह को भी ऑन रखा जा सके। तो अंदर और एक बॉक्स है। तो ये रही हमारी मेन प्रोडक्ट, ये रही स्टार वॉट के, जैसे कि आप देख सकते हैं इन्हीं के वेबसाइट से ऑफिशियली ऑर्डर करिए। इफ सील वाज ब्रोकन डू नॉट एक्सेप्ट। ओके, ब्रोकन नहीं है। स्टार वॉट वाईफाई राउटर ऑनलाइन यूपीएस, ये 3-in-1 वाली है बाय द वे। और यहाँ पे और कुछ डिटेल्स, कीप्स यू कनेक्टेड इंटरनेट इवन ड्यूरिंग पावर कट्स। अब कुछ देर ही चलनी चाहिए बेसिकली। I can trim this part, during power cuts. the sound basically. Power cuts. During power cuts. The breathing sound can be removed. Let's see if we can remove it without interrupting. Internet even during power cuts. अब कुछ देर ही चलनी। Let's make a little bit curvature over here. during power cuts. अब कुछ देर ही चलनी चाहिए। Yep, better. इंटरनेट इवन ड्यूरिंग पावर कट्स। अब कुछ देर ही चलनी चाहिए वैसे। We can go even further, I think, with this. Let's go for 5. इंटरनेट इवन ड्यूरिंग पावर कट्स। अब कुछ देर ही चलनी चाहिए बेसिकली, लेकिन मेरा इंटरनेट इवन ड्यूरिंग पावर कट्स। अब कुछ देर ही It's perfect, but it's better than what we had. चलनी चाहिए ड्यूरिंग पावर कट्स। अब कुछ देर ही चलनी चाहिए बेसिकली, लेकिन मेरा अभी जो कनेक्शन है वो 3 to 4 आवर्स की बैकअप दे देगा इजीली, जो कि चाहिए नहीं, बस 5-10 मिनट के लिए चल जाए बहुत है, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी उतनी जाती नहीं है अनलेस की कुछ खराब हो जाए। 0 लैग स्विचिंग, जैसे कि 3 आउटपुट देख सकते हो आप यहाँ पे, 12 वोल्ट 2 एम्पियर, 9 वोल्ट 1 एम्पियर, 5 वोल्ट 1 एम्पियर। तो और यूएसबी आउटपुट भी है जो मैं रास्पबेरी पाई पे टेस्ट करूंगा। अगर काम करता है तो बढ़िया है। वैसे मेक इन इंडिया, आई डोंट नो ये इंडियन कंप्लीटली इंडियन प्रोडक्ट है या नहीं, बट आई थिंक इंडियन कंपनी है, प्लस इंडिया में ही बनाते हैं, चंडीगढ़ या पंजाब बेस्ड है। कैपेसिटी 24.3 वॉट आवर, बैकअप 3 to 6 आवर्स, 3 आवर्स के आसपास मिलेगी मेरे हिसाब से। एक करंट है 2 एम्पियर। और बाय द वे मैं इसीलिए कह रहा था, ये 2 एम्पियर मैक्सिमम सपोर्ट करता है, और रास्पबेरी पाई को फुल्ली फंक्शन करने के लिए प्रॉपर्ली, जो कि मेरी रास्पबेरी पाई 4 है, उसको 5 एम्पियर चाहिए होती है। बट मेरे ख्याल से वो इसमें भी चल जाएगी, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा उस पर, सिर्फ डीएनएस सर्वर लगा हुआ है ऐड वगैरह ब्लॉकिंग करने के लिए, बस इतना ही है। I can cut it, but I think I'll keep it to use it for like enticing other viewers, and I'm not sure, but if like someone notices and comments how did you do that or something, then I'll be able to make another video, so that's why I'll keep it, I think. मैं इसीलिए कह रहा था, ये 2 एम्पियर मैक्सिमम सपोर्ट करता है, और रास्पबेरी पाई को फुल्ली, or if someone asked me like how is it performing or how did you manage it or something like that in comments, then I will have
one more video idea basically. So I think that's why I'll keep it. Otherwise it's not necessary for this particular video, because most people will be buying it for their router or ONT devices, etc. Not for something like Raspberry Pi. बाय द वे मैं इसीलिए कह रहा था ये 2 एम्पियर मैक्सिमम सपोर्ट करता है और रास्पबेरी पाई को फुल्ली फंक्शन करने के लिए प्रॉपर्ली, जो कि मेरी रास्पबेरी पाई 4 है, उसको 5 एम्पियर चाहिए होती है, बट मेरे ख्याल से वो इसमें भी चल जाएगी क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा उस पर, सिर्फ DNS सर्वर लगा हुआ है ऐड वगैरह ब्लॉकिंग करने के लिए, बस इतना ही है इसमें और कुछ. Yeah, I think I'll keep it. It's like a call to action basically. स्मार्ट चार्ज To ask people to comment if they are interested in learning about that. तो है नहीं जो मैं दिखाऊं. स्मार्ट चार्ज है नहीं जो मैं दिखाऊं. स्मार्ट चार्जिंग. Again, yeah, here we have like breathing type of sound. So although I'm saying smart, which is starts with this sound, but right now like sounds like a screeching sound basically. तो है नहीं जो मैं दिखाऊं. स्मार्ट चार्जिंग. Okay, now it's better. तो है नहीं जो मैं दिखाऊं. स्मार्ट चार्जिंग, अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी, प्लग इन प्ले, 24/7 ऑपरेशन के लिए बनी हुई है. यहाँ कंपनी डिटेल्स वगैरह, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, ठीक है, और कुछ है नहीं दिखाने के लिए. शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ये नहीं पता. ओवरचार्ज प्रोटेक्शन तो अच्छा ही है. रेगुलेटेड वोल्टेज आउटपुट, ओके, ये भी बढ़िया है. और हाँ, ये एक चीज जो मेरे को Talking about battery replacement program. ये भी बढ़िया है. और हाँ, ये Need to cut that part. एक चीज जो मेरे And cut until here. ओके, ये भी बढ़िया है. और हाँ, ये एक चीज जो मेरे को अच्छी लगी, ये भी बढ़िया है. और हाँ, ये एक चीज जो मेरे We can even cut this part to be honest, but let's see if we can like salvage the audio by introducing crossfade over here. ये भी बढ़िया है. और हाँ, ये एक चीज जो मेरे को अच्छी लगी यहाँ. और हाँ, ये एक चीज जो So like I was a little bit excited over there, and the other part has lower audio. ये भी बढ़िया है. और हाँ, ये एक चीज जो मेरे को अच्छी लगी यहाँ पे. That's fine. और हाँ, ये एक चीज जो मेरे को अच्छी लगी, But I think it would be better if we just cut that part. Although like I wanted to share that excitement. बढ़िया है. और हाँ, ये That's fine, I guess. वोल्टेज आउटपुट, ओके, ये भी बढ़िया है. एक चीज जो मेरे को अच्छी लगी यहाँ पे कि ये Nice. बैटरी रिप्लेसमेंट भी ऑफर, ये भी बढ़िया है. एक चीज जो मेरे को अच्छी लगी यहाँ पे कि ये बैटरी रिप्लेसमेंट भी ऑफर करते हैं और वो भी पिकअप वगैरह के साथ. तो आप अगर ऑर्डर करोगे तो उन्हीं का बंदा आएगा, पिकअप करेगा, लेके जाएगा एंड रिप्लेस करके फिर वापस आपको डिलीवर भी करेगा प्रोडक्ट. तो ये अच्छा है. रिप्लेसेबल बैटरी इनसाइड, इन्हीं के वेबसाइट पे है, जाके देख सकते हो. रिप्लेसमेंट प्रोग्राम भी अवेलेबल है, तो वो भी एक बढ़िया चीज है. जस्ट इन केस यू नीड इट, मतलब वेस्ट नहीं होगी ये, आप रिप्लेस इजिली करवा सकते हो. तो सील अभी मैंने खुद कट करी. और एक्टिवेट वारंटी पहले दिख रहा है, तो ये वारंटी एक्टिवेट करने के लिए है. आई थिंक ये वेबसाइट पे ले जाएगी. यहाँ पे आप बेसिकली अपना डिटेल भरोगे, ऑर्डर नंबर वगैरह, एंड आप अपनी वारंटी एक्टिवेट करोगे. जो ये ऊपर 6 मंथ एडिशनल वारंटी इसके लिए है. यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड. स्विच ऑफ योर राउटर मेन पावर सप्लाई, डिस्कनेक्ट द राउटर फ्रॉम पावर अडेप्टर. बेसिक चीजें बेसिकली, अगर किसी को नहीं पता है तो वो कर सकता है यहाँ से, ठीक है. यहाँ पे बेसिकली डायग्राम वगैरह भी है जस्ट इन केस अगर आपको चाहिए. और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गाइड वगैरह, डिटेल वगैरह. यहाँ पे डीसी स्प्लिटर केबल यूज नहीं करने के लिए लिखा हुआ है वगैरह. ऑब्वियसली बेसिक चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए. एंड यहाँ पे बहुत सारे कनेक्टर्स है, ये मेरे को पसंद आया. ऑक्टर पे मेरे को सिर्फ 2 कनेक्शन मिले थे, जिसमें से एक ही यूजफुल रहा और एक यूजलेस हो गया. और प्लस उसका जो कनेक्टर है वो ढीला है. जो मेरे को अच्छी लगी, I एक चीज pressed the wrong button. यहाँ पे कि ये बैटरी रिप्लेसमेंट भी ऑफर करते So like it went back a lot. We were around here, right? Not the adapter, I think. Yep.
है जिसमें से एक ही यूजफुल रहा और एक यूजलेस हो गया। और प्लस उसका जो कनेक्टर है वो ढीला है। और प्लस उसका जो कनेक्ट So here I've said the word incorrectly, which can be cut. कनेक्टर And without breaking the audio. हो गया। और प्लस उसका जो कनेक्टर है वो ढीला है और ये रहा Yep. हो गया। और प्लस उसका जो कनेक्टर है वो ढीला है और ये रहा अडाप्टर, चार्जिंग अडाप्टर बेसिकली, और डायरेक्ट पावर भी ये देगा। ऑक्टर का भी कुछ ऐसा ही डिजाइन है बेसिकली, और आप उसी तरह से इस्तेमाल कर। तो यहाँ पे बेसिकली 12 वोल्ट 2 एम्पियर का अडाप्टर है जो इसको डायरेक्टली चार्ज करेगा प्लस इस्तेमाल करेगा। TVM केबल लंबा है काफी, आई थिंक। ओके, तो काफी लंबी केबल है, इतना चाहिए नहीं मेरे को, छोटा सा ही चाहिए था, बट बढ़िया ही है ऑब्वियसली, इसको अगर दूर तक रखना है तो। अडाप्टर काफी बड़ा है वैसे, अगर छोटा फॉर्म पे होता तो बेटर। काफी बड़ा है वैसे, अगर छोटा फॉर्म पे है वैसे, अगर छोटा फॉर्म पे होता तो बेटर होता, बट चलेगा। एंड थोड़ा हेवी लग रहा है मेरे पहले उस वाले स्विच के मुकाबले। आई थिंक उसमें अडाप्टर नहीं आई थी, मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्टली, बहुत टाइम हो गया खरीदे हुए इसलिए, बट उसमें अडाप्टर आई थिंक नहीं थी। और ये हमारा मेन बैटरी या मेन यूनिट, ये काफी हल्का लगा। यहाँ पे है ही नहीं दिखाने लायक, ये बस हल्का सा चार्ज द यूपीएस कम्प्लीटली बिफोर कनेक्टिंग टू राउटर फॉर्म पे होता तो बेटर होता, बट चलेगा। एंड थोड़ा हेवी लग रहा है मेरे पहले उस वाले स्विच के मुकाबले। आई थिंक उसमें अडाप्टर I think I already need to cut something. बेटा बता, बट चलेगा। एंड थोड़ा हेवी लग रहा है मेरे पहले There. I can cut this part. एंड थोड़ा हेवी लग रहा है मेरे पहले उस वाले Again. लग रहा है मेरे पहले उस वाले स्विच I'm not sure. पहले उस वाले Okay, I think I can completely remove this part. एंड थोड़ा हेवी लग रहा है उस वाले स्विच के मुकाबले। आई थिंक Yep. उसमें अडाप्टर नहीं आई थी, मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्टली, बहुत टाइम हो गया खरीदे हुए इसलिए, बट उसमें अडाप्टर आई थिंक नहीं थी। और ये हमारा मेन बैटरी या मेन यूनिट, ये काफी हल्का लगा। यहाँ पे है ही नहीं दिखाने लायक, ये बस हल्का सा चार्ज द यूपीएस कम्प्लीटली बिफोर कनेक्टिंग टू राउटर स्लैश मॉडेम। ओके, तो यहाँ पे और कुछ है नहीं, इसको निकाल लेता हूँ। ये रही हमारी अडाप्टर, आई मीन बैटरी। और यहाँ पे फिर डिटेल्स भरी पड़ी है कुछ, जस्ट इन केस किसी को देखना हो। यहाँ पे 3 आउटपुट जैसे कि आप देख सकते हो, हालांकि काफी हल्की है, मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे बैटरी है भी, बट है ऑब्वियसली। तब ये क्वालिटी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मेरे को यहाँ पे देख, बट Give me a moment. Okay. फटाफटा सा ये एलईडी इंडिकेटर, ये ऑन ऑफ स्विच, ये पावर इनपुट जो कि अडेप्टर के थ्रू जाएगा, जो मैंने अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले। यहाँ पे बाकी सारी डिटेल्स अवेलेबल है। ये बेसिकली ऑन ऑफ, आई मीन इसको खोल के बेसिकली बैटरी रिप्लेस होगा, इसलिए यहाँ पे आई थिंक। ओके, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे बेसिकली चार्ज कर लेता हूँ। एंड चार्जिंग इनपुट बाय द वे इनपुट साइड पे जाएगी, जो कि ये, तो ये इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है और ये हम लगा देंगे चार्जिंग पे। रेड लाइट यानी कि चार्जिंग, आप मैनुअल में देख सकते थे, ये रहा रेड लाइट ऑन राउटर यूपीएस इंडिकेट्स, ये रहा रेड लाइट ऑन राउटर, रेड लाइट ऑन राउटर। So this part can be cut until here. ये रहा रेड लाइट ऑन राउटर यूपीएस इंडिकेट, ये रहा रेड लाइट ऑन राउटर यूपीएस इंडिकेट्स राउटर यूपीएस इज रिसीविंग पावर फ्रॉम द अडाप्टर एंड बैटरी चार्जिंग, इनपुट पावर एंड बैटरी इज फुली चार्ज। तो ये जब ब्लू लाइट हो जाएगी तब, अगर आपको प्रॉपर्ली मतलब इसको यूज करना है, तो जब ब्लू लाइट हो जाएगी तब आप अपने राउटर वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, बेसिकली वो लिखा हुआ है। लाइट ऑन द राउटर यूपीएस इंडिकेट्स राउटर यूपीएस
I have no idea what I'm saying over Router here. UPS indicates router UPS is receiving power from the adapter and battery charging. Input power and battery is fully charged. तो ये जब ब्लू लाइट हो जाएगी तब, अगर आपको प्रॉपरली मतलब इसको यूज करना है, तो जब ब्लू लाइट हो जाएगी तब आप अपने राउटर यूज करना है, तो जब ब्लू लाइट हो जाएगी तब आप अपने राउटर वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली वो लिखा हुआ है। लाइट ऑन, Yeah, light on the router UPS indicates router UPS mode is on. Okay. I think I can cut this part. बेसिकली वो लिखा हुआ है। अभी यूपीएस मोड ऑन नहीं है। बेसिकली आई थिंक ये जो ओस यहाँ पे ओ टाइप की डिजाइन है वो ऑफ, ये आई मीन ये सिंपल लाइन जो है वो ऑन की साइन है। अब ये देख लेते हैं, इसका भी साइड खुला हुआ है क्या? यस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एडाप्टर्स मिले हुए हैं। ये सब तो पता नहीं रीच कर पाएगा या नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा। अगर कर पाता है तो बढ़िया है, नहीं कर पाता है तो देखेंगे क्या होता है। 5 वोल्ट कनेक्ट टू 5 वोल्ट ओनली। ओके, तो ये सिर्फ 5 वोल्ट पे ही जाएगा यूएसबी वाला। तो हमारा 5 वोल्ट ये रहा, कनेक्टर पे जाएगा ये। और बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा मिले हुए हैं। ओके, यूएसबी का क्वालिटी बहुत खराब है, पता नहीं यहाँ पे दिख रहा है या नहीं। I think I also need to देखते हैं प्रॉपरली कनेक्ट भी होती है या नहीं। एक अटेम्प्ट के लिए देखता हूँ ये फिट होती है या नहीं। ये फिट तो होती है बट काफी घटिया क्वालिटी है। देख के थोड़ा कॉन्फिडेंट चला गया यूएसबी पोर्ट। बाकी ये इधर ठीक ही लग रहा है। ये बहुत यहाँ पे ना कुछ चिपचिपा सा फील हो रहा है, पता नहीं क्या है, ग्रीस टाइप। ये 5 वोल्ट के लिए है और बाकी सारे एडाप्टर्स हैं आई थिंक, क्योंकि सेम साइज के हैं जैसे कि देख सकते हो। तो एक साइड एडाप्टर लगा के आप बेसिकली अगर कोई दूसरा टाइप का डिवाइस पावर करना है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक एडाप्टर तो बहुत खुश लग रहा है। ऐसा क्यों? कनेक्टर आपको राउटर पे मिलता है और लैपटॉप पे। सिमिलरली ये दो Not really. और उसके साथ ये दो ठो एडाप्टर मिला हुआ है। तो ये है बेसिकली, एंड सारे ट्राई करूंगा ऑब्वियसली। ये 5 वोल्ट 1 एम्पियर सप्लाई करता है। प्लीज फॉलो कर देना अगर कर पाओ तो। मैं 50 फॉलोअर रीच करने की कोशिश कर रहा हूँ 30 डेज में। अभी यूपीएस मोड ऑन नहीं है। बेसिकली आई थिंक ये जो ओस यहाँ पे ओ टाइप की डिजाइन है वो ऑफ, ये आई मीन ये सिंपल लाइन जो है वो ऑन की साइन है। I think I need to like work a little bit on the equalizer. तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एडाप्टर्स मिले हुए हैं। अभी बहुत छोटे वैसे है ये सब, तो पता नहीं रीच कर पाएगा या नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा। अगर कर पाता है तो बढ़िया है, नहीं कर पाता है तो देखेंगे क्या होता है। 5 वोल्ट कनेक्ट टू 5 वोल्ट ओनली। ओके, तो ये सिर्फ 5 वोल्ट पे ही जाएगा यूएसबी वाला। तो हमारा 5 वोल्ट ये रहा, कनेक्टर पे जाएगा ये। और बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा मिले हुए हैं। ओके, यूएसबी का क्वालिटी बहुत खराब है, पता नहीं यहाँ पे दिख रहा है या नहीं। क्वालिटी बहुत खराब, I don't have like any audio recorded over here for some reason. I don't know. पता नहीं यहाँ पे दिख रहा है या नहीं। So I'm saying पता नहीं यहाँ पे दिख रहा है या नहीं until this point, and then there is silence. But it's still sounding natural, so I think I'll keep it. पता नहीं यहाँ पे दिख रहा है या नहीं। क्वालिटी बहुत खराब, Or maybe like cut a little bit from here, because it's completely silent from here to here. क्वालिटी पता नहीं यहाँ पे दिख रहा है या नहीं। क्वालिटी बहुत खराब है, देखते हैं That's fine. प्रॉपरली कनेक्ट भी होती है या नहीं। एक अटेम्प्ट के लिए देखता हूँ ये फिट होती है या नहीं। ये फिट तो होती है बट काफी घटिया क्वालिटी है। देख के थोड़ा कॉन्फिडेंट चला गया यूएसबी पोर्ट। बाकी ये इधर ठीक ही लग रहा है। ये बहुत यहाँ पे ना कुछ चिपचिपा सा फील हो रहा है, पता नहीं क्या है, ग्रीस टाइप। ये 5 वोल्ट के लिए है और बाकी सारे एडाप्टर्स हैं आई थिंक, क्योंकि सेम साइज के हैं जैसे कि देख सकते हो। तो एक साइड एडाप्टर लगा के आप बेसिकली अगर कोई दूसरा टाइप का डिवाइस पावर करना है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन अगेन और एक एडाप्टर यहाँ पे, ये ज्यादातर ऐसा वाला कनेक्टर आपको राउटर Fumbling about here, I think. ये ज्यादातर ऐसा वाला Here. ये ज्यादातर ऐसा वाला This can be cut, I think. Let's check about here. यहाँ पे ये ज्यादातर ऐसा वाला कनेक्टर आपको राउटर पे मिलता है और लैपटॉप पे। सिमिलरली ये दो केबल सेम है और उसके साथ ये दो ठो एडाप्टर मिला हुआ है। तो ये है बेसिकली, एंड सारे ट्राई करूंगा ऑब्वियसली। ये 5 वोल्ट 1 एम्पियर सप्लाई करता है या 2 एम्पियर सप्लाई करता है, जहां तक मुझे पता है, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। यहाँ पे डिटेल है क्या, देखते हैं। 5 वोल्ट आउटपुट, तो यहाँ पे सिर्फ आउटपुट का नाम लिखा हुआ है। 5 वोल्ट 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर Again, this is thing is not really good here, but it sells the idea that I was like looking for the information and struggling to find it basically. So I'm not sure
theoretically if it's a good thing or not, but right now we are trying to make the video as fast as possible, so we'll cut this part. I think आउटपुट का नाम लिखा हुआ है this part. ऐसा वाला कनेक्टर आपको राउटर पे मिलता है और लैपटॉप पे सिमिलरली ये दो केबल सेम है और उसके साथ ये दो ठो अडाप्टर मिला हुआ है, तो ये है बेसिकली। एंड सारे ट्राई करूंगा ऑब्वियसली। ये 5 वोल्ट 1 एम्पियर सप्लाई करता है या 2 एम्पियर सप्लाई करता है, जहां तक मुझे पता है, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। यहाँ पे डिटेल है क्या, देखते हैं। 5 वोल्ट आउटपुट, तो यहाँ पे सिर्फ आउटपुट का नाम लिखा हुआ है 5 वोल्ट 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर एनफ नहीं है। यहाँ पे अब देख 5 वोल्ट 1 एम्पियर लिखा हुआ है बॉक्स पे, तो वही एनफ नहीं है, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा पावर चाहिए होगा। ओके, बाकी चल जाएंगे सारे डिवाइस, जो नेटवर्क स्विच वगैरह, तो वो मैं बाद में टेस्ट करता हूँ। एंड आई गेस आउटरो में बाद में रिपोर्ट करता हूँ। एक बार ये फुल्ली चार्ज हो जाए उसके बाद ट्राई करूंगा डायरेक्टली, क्योंकि ताकि प्रॉपर सप्लाई मिले, पावर सप्लाई। एंड बाय द वे, पावर अडेप्टर पे भी एक ग्रीन एलईडी जल रही है। मेरे पास अभी उसको दिखाने के लिए कैमरा एंगल नहीं है, बट वहाँ पे भी ग्रीन एलईडी जलती है बेसिकली, अगर आपको चाहिए तो ये थी स्टार वॉर्ड की मिनी यूपीएस। एंड ऑब्वियसली अगर कुछ खराब मिलती है मुझे या कुछ प्रॉपरली काम नहीं करता है, तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लिप यहाँ पे ऐड कर दूंगा जो आप देखोगे। एंड अगर सब कुछ ठीक रहता है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप जाके कर दो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय। That's fine, but I need to work on like equalization, and the final cut is ready, I think. So these are the cuts that we made. Next I need to work on audio a little bit, because I noticed the audio is clipping at places, not everywhere, but it is clipping a little bit in some places. So let's enable loop and play it, कई दिनों से मैं बात and then go to equalizer. मेरे लाइव स्ट्रीम वगैरह पे, एंड मैंने वो कर लिया एक। Okay, the equalizer is not visible because the window capture does not show it, I guess. Let's go to screen. Okay, now you guys will be able to see. I'm trying to find the harsh frequency that was like so I think position is fine. Let's wait and see, I guess, for the clipping. Okay, maybe I need to just reduce the gain over here after compressor. Let's try this. This time I'm just listening to the audio to like find out if the okay, you guys are not listening to the sound at all. Sorry about that. I'm just working on equalizer and stuff. Like I need to. There's no point in making a listen to you guys making this list, but
What the hell am I saying? Sorry about this. I'm like feeling very sleepy. So you guys won't be able to listen to it right now, but if you want, I can enable it. Let's enable it, I guess. Audio source resolve. I added the audio, but it's the application capture is not working. I guess I need to enable the display capture. Even the desktop audio is not visible. I don't know why. Even when I enable the desktop audio, it's still not passing the sound for some reason. So let's go to Windows here, I guess. Only thing is you won't see the equalization that I have done, but I think at least you will be able to like listen to the audio. Disconnect the router from power adapter. बेसिक चीजें बेसिकली अगर किसी को नहीं पता है तो वो कर सकता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली डायग्राम वगैरह भी है जस्ट इन केस अगर आपको चाहिए। The sound is good enough now, and also like sometimes it feels like it's sleeping, but I don't think it is. बेसिक चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए। It shouldn't. Okay, yeah, it is happening sometimes. मेरे को सिर्फ 2 कनेक्शन मिले थे जिसमें से एक ही यूजफुल रहा और एक यूजलेस हो गया। और प्लस उसका जो right now what I can do is like maybe mix this change track type to mono. Let's not select anything. Okay, कनेक्टर है वो ढीला है और ये रहा अडाप्टर, चार्जिंग अडाप्टर बेसिकली, और डायरेक्ट पावर भी ये देगा। ऑक्टर का भी कुछ ऐसा ही डिजाइन है बेसिकली। okay, I just wanted to see how that will sound, but it's fine. I mean, it should always be mono for the voiceover in normal videos. Right now I'm looking for the option to mix them. I guess I'll find it here. Bus format, bus assign, input. So there should be an option to like mix in a bus or something like that. Can't find it. Even mixer. What does that mean? Okay, this. Should be under. You guys are not seeing what I'm doing right now, which is like funny. But the thing is, if I like screen record for some reason, like the desktop audio does not play the audio that I'm listening to. So I'm confused what to do. Okay, so there is no option. So I will simply render this, I guess, the audio part at least, maybe, and then I will apply normalize audio levels. Let's try this. Independent, it's better, I think. Let's check. Ooh, could be disastrous.
हेलो एंड वेलकम अगेन। कई दिनों से मैं बात कर रहा था एक मिनी यूपीएस परचेस करने की मेरे लाइव स्ट्रीम वगैरह पे, एंड मैंने वो कर लिया। एक ऑलरेडी मैं यूज कर रहा हूँ, ऑक्टेर करके समथिंग है, तो उसमें सिंगल आउटपुट है। मेरे को लगा था कि डबल आउटपुट होगा, जो कि एक मिस्टेक परचेस थी, बट Okay, actually sounding good. परचेस ही बन गई, क्योंकि मेरे को दो एक्चुअल में चाहिए हुई थी मिनी यूपीएस। तो अभी मेरे पास जो आई हुई है, जो मैंने अभी ऑर्डर करी हुई है, स्टार वॉट का है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो ये 3-in-1 आउटपुट है। बेसिकली यहाँ पे 3 आउटपुट मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को 2 चाहिए, और प्लस एक मेरे पास ऑलरेडी है, जैसा कि मैंने बताया, ऑक्टर का सिंगल आउटपुट वाला। तो तीनों मिला के मेरा यहाँ पे सिस्टम बन जाएगा। अगर आप अपने लिए, अपने इंटरनेट या राउटर के लिए खरीद रहे हो मिनी यूपीएस, तो याद रखना कि आपको एटलीस्ट 2 आउटपुट चाहिए होगा इन मोस्ट केसेस, क्योंकि आपको आपके राउटर को भी पावर करना है, प्लस आपके ओएनयू को भी, या ओएनटी डिवाइस जो भी है उसको भी पावर करना है। तो एटलीस्ट 2 तो लगभग सबको चाहिए होगा। एंड अगर सिंगल वाला आउटपुट अगर आप खरीदते हैं, तो वो किस केस पे खरीद सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका I almost broke there. Single वाला तो उस केस में फिर सिंगल आउटपुट बेटर होगा, और आपको 2 खरीदना पड़ेगा। एंड मेरे केस में मुझे 3 आउटपुट वाला चाहिए था। तो वो इसलिए क्योंकि मेरे पास 3 डिवाइसेस को पावर करने पड़े, मुझे 3 डिवाइसेस पावर करने पड़ेंगे एक साथ। वो इसलिए क्योंकि मेरे घर पे मल्टीपल कनेक्शंस हैं, तो एक नेटवर्क स्विच भी एक्स्ट्रा लगा हुआ है, जिसके थ्रू बेसिकली मल्टीपल कनेक्शंस यूज किया जा सकता है। तो इसलिए मेरे पास 3 डिवाइस है, राउटर, ओएनयू और स्विच। तो ये तीनों का ऑन रहना हमेशा जरूरी है बिजली जाने के बाद भी। तो इसलिए मैंने But I think we can cut a small part over here. बिजली जाने के बाद भी, तो इसलिए मैंने 3 आउटपुट वाला यहाँ पे ऑर्डर करा है। तीनों का ऑन रहना, Okay, yeah, तो ये तीनों का ऑन रहना, this part. तो ये तीनों का ऑन रहना हमें, तो ये तीनों का ऑन रहना हमें, ये तीनों का, तो ये तीनों का ऑन रहना हमें। It's not a big deal, but I like to experiment with this stuff. Can we still make it sound normal? It's the challenge over here. तो ये तीनों का ऑन रहना हमेशा, तो ये तीनों का ऑन रहना, Almost, but not completely. तो ये तीनों का ऑन रहना हमें। It's fine actually, but I guess let's keep it. तो ये तीनों का ऑन, The thing is, I have mixed 2 words in there. तो ये तीनों का ऑन रहना, Ka and then on. I have mixed 2 words, तीनों का ऑन रहना, and that's why it's sounding weird. Let's cut this. तो ये तीनों का ऑन रहना हमेशा Actually, that's like saving something. स्विच। तो ये तीनों का ऑन रहना हमेशा जरूरी है Okay, let's जाने keep के it. बाद भी। तो इसलिए मैंने 3 आउटपुट वाला यहाँ पे ऑर्डर करा है। हालांकि यहाँ पे से तीसरा जो आउटपुट होगा, वो मैं अपने डीएनएस सर्वर के लिए यूज करने वाला हूँ, जो कि मैं रास्पबेरी पाई के थ्रू बनाई हुई है खुद के लिए। By the way, this is 1-year-old video. वो इस्तेमाल करूंगा। wearing the same And t-shirt. साथ ही साथ यहाँ जो ऑलरेडी मेरे परचेस कर रखी है ऑक्टर की, वो या तो राउटर को या तो स्विच को पावर कर रही होगी। और अभी जो अनबॉक्स करने वाला हूँ, अभी जो मैंने ली है, वो सिमिलरली बेसिकली 3 डिवाइस को पावर कर रही होगी, जो कि होगी रास्पबेरी पाई। आई थिंक मेरे उसके लिए प्रॉपर पावर सोर्स ये नहीं होने वाली है। आई डोंट नो, मुझे चेक करना पड़ेगा। कम पावर ट्रांसफर करने वाली है एम्पियर के मामले में, बट देखता हूँ अगर काम करती है तो। क्योंकि ऐसे तो मैं सिर्फ डीएनएस सर्वर के लिए यूज कर रहा हूँ, तो आई थिंक चल जाएगी रास्पबेरी पाई, बट मैं 100% श्योर नहीं हूँ। तो देखते हैं। और बाकी राउटर और स्विच वगैरह जो है, ओएनयू वगैरह है, वो सब इजीली चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखते हैं कैसा है। ये बेसिकली अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्शन के लिए ट्राई कर रहा हूँ। एक तो ऑलरेडी लगी हुई है, जिससे राउटर हमेशा ऑन रहती है, बट मेरे को एक्स्ट्रा और चाहिए थे, ताकि ओएनयू स्विच वगैरह को भी ऑन रखा जा सके। तो अंदर और एक बॉक्स है। तो ये रही हमारी मेन प्रोडक्ट, ये रही स्टार वॉट के। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्हीं के वेबसाइट से ऑफिशियली ऑर्डर करिए। इफ सील वाज ब्रोकन, डू नॉट एक्सेप्ट। ओके, ब्रोकन नहीं है। स्टार वॉट वाईफाई राउटर ऑनलाइन यूपीएस, ये 3-in-1 वाली है बाय द वे। और यहाँ पे और कुछ डिटेल्स, कीप्स यू कनेक्टेड टू इंटरनेट इवन ड्यूरिंग पावर कट्स। अब कुछ देर ही चलनी चाहिए बेसिकली, लेकिन मेरा अभी जो कनेक्शन है वो 3 to 4 आवर्स की बैकअप दे देगा इजीली, जो कि चाहिए नहीं, बस 5-10 मिनट के लिए चल जाए बहुत है। क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी उतनी जाती नहीं है, अनलेस की कुछ खराब हो जाए। 0 लैग स्विचिंग, जैसे कि 3 आउटपुट देख सकते हो आप यहाँ पे, 12 वोल्ट 2 एम्पियर, 9 वोल्ट 1 एम्पियर, 5 वोल्ट 1 एम्पियर। तो और यूएसबी आउटपुट भी है, जो मैं रास्पबेरी पाई पे टेस्ट करूंगा अगर काम करता है तो।
काम करता है तो बढ़िया है। वैसे मेक इन इंडिया, आई डोंट नो ये इंडियन कंप्लीटली इंडियन प्रोडक्ट है या नहीं, बट आई थिंक इंडियन कंपनी है, प्लस इंडिया में ही बनाते हैं, चंडीगढ़ या पंजाब बेस्ड है। कैपेसिटी 24.3 वॉट आवर, बैकअप 3 to 6 आवर्स, 3 आवर्स के आसपास मिलेगी मेरे हिसाब से। Please make sure to follow if you can. मैं इसीलिए कह रहा It था will be like very helpful to me. I'm trying to reach 50 followers by the end of this year, जो कि मेरी रास्पबेरी पाई 4 है, and that will also, I think, allow me to मैं कुछ नहीं कर get into the affiliate Twitch affiliate program. बस इतना ही है, इसमें और कुछ डिटेल तो है नहीं जो मैं दिखाऊं। स्मार्ट चार्जिंग, अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी, प्लग एंड प्ले, 24/7 ऑपरेशन के लिए बनी हुई है। यहाँ कंपनी डिटेल्स वगैरह, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, ठीक है, और कुछ है नहीं दिखाने के लिए। Okay, audio is not clipping anymore and it's sounding also great, so I think the final cut and the audio is fine right now. The next step would be to include any b-rolls if needed, and I think it will be needed. And on top of that, the third piece would be to include text and call to actions and stuff. And then finally, background music if needed. I don't think I'll be using a background music, I don't like it. And then finally, the SFX. So the video will go through now 4 more stages to be complete. Next stage is to note down any b-roll requirements that I will have, and then I'll capture the b-rolls or maybe use images. And sometimes when I'm lazy, I simply cut clips from some other YouTubers and stuff and then use it, but with credit. If you guys have seen my channel, tech channel, then you know it. Since I don't have like all the products, I usually have to like cut the parts of like other YouTubers video. Like I use sometimes Mr. Who's the Boss, sometimes MKBST, sometimes some Indian creators and stuff. So yeah, I use those clips, and then you will see on the left hand side, most of the time left hand side, there will be like mention of the channel that I am sourcing through the clips, and I also mention them in the description usually. So it's okay to use them, I guess, but just I guess give some credit, I guess that should be fine. So yeah, in this case I think I don't need any third-party b-rolls because all the products I mentioned on this thing and this video, I already have all of them. But yeah, that they are very dirty right now, so I think use images from the internet, I guess, official images of the products maybe, instead of like showing them in reality. Let me check for a moment. Okay, yep, definitely very dirty, very dusty and stuff. So yeah, I don't think I'll include them in the b-roll but it's there. So yeah, I'll simply use images instead of shooting the same thing. So I have a Raspberry Pi over here on my right side, where the Raspberry Pi is connected to the internet cable that comes from the network switch that I have, and before that there is a router and then 2 internet connections basically. So 2 internet connections comes to my home here, goes through 2 ONUs, and then one of the both connection goes to a switch, and then from switch there is a connection to like my router. So yeah, it's a complex system, and then router doesn't output directly, so the another cable from router goes to like my Raspberry Pi, but Raspberry Pi is not using it for connecting to internet, but acting as a DNS server basically. So yeah, whenever I place something, whenever I try something basically to load a website or something, even now when it is streaming, so the request first of all goes to my Raspberry Pi device, which is my own DNS server, private DNS server. Then from there it sends the request to Cloudflare or Google DNS, OpenDNS and stuff. So I've chosen a particular set of DNS that I trust basically a little bit, and yeah, that's how it works. So my internet setup is a bit complicated, but I do it because I don't like ads and stuff. So yeah, my DNS server basically filters all the
ad related DNS requests. So it kind of reduces a lot of ads and stuff on my phones, laptops, TVs, everything. So it's very useful thing. If you don't know, check it out. And I might even make my own video about it. I'm not sure at the moment. I did plan to make a video about that, but as you can see, this is a 1-year-old video, so you can assume what happened there. So yeah, I don't have recorded video for that process, by the way, because I was also trying it for the first time, so I did not record it because I didn't know what I'll be doing. And I also have a Home Assistant enabled, and it's connected to like almost all my devices. Like for example, tablet, Raspberry Pi is also included, and any smart device that I'll buy will be connected to the Home Assistant. And then I have created some automations. Like for example, there is a automation for speed testing the internet every half an hour, basically. Yeah, so like I have a lot of things basically, and I get notifications and stuff on certain occasions. And by occasion I mean certain scenarios. Like for example, I did get a notification right now that the internet connection is struggling right now. And yesterday as well, this thing happened when I was like streaming the gaming channel, and then I had to like quit after 1 hour. So yeah, things are not going very great right now. So yeah, it would be like very helpful if I can like upgrade things. Right now it's terrible, to be honest. So even my backup connection is not great since I live in a village. So yeah, I have to work on it. And even the 5G is not good enough over here. So it works sometime, it doesn't work sometime. It's complicated. And like paying for the internet feels like wasting money, to be honest. But I have no choice right now. I have to pay for it. All of them. I have multiple internet connections. None of them are perfect, which is sad. Okay, I think I'm done with this streaming, but let's chat a little bit and then I'll end it. I want to like edit further, but I think I will need to like gather some b-rolls and stuff, which will take a lot of time. I'm not sure whether to like continue with the video editing. I mean, I will edit the video, but whether to like do it on this stream or not. If I had a lot of viewers, I would have continued, I guess. But since no one's interested in video editing, I will move on to gaming. I'm trying everything, by the way. So video editing does get a little bit of viewers, but it's not enough to like compare it to like the gaming streams. So for live streaming, I think gaming is definitely a better choice. But I have seen like people even like coding on these streams and people are still watching. So I don't think it's just, I don't think like there are no viewers for video editing process. I just think that it's a little bit difficult to like gather that or that particular audience. I think coding would be even more difficult, I guess. But I do watch a lot of coding streams right now, because it is like very surprising to me. I didn't think like anyone would watch something like that, but people watch them. So yeah, it's very interesting to me. Let's close the video editor. Go on Twitch. They might be live. I can show you guys if they are. I don't think they are, but if they are. Funny. What's Cuphead? Is it a game?
Marvel Rivals. Is it released already? What the hell? Okay, so no coding streams right now, but I have some accounts that I follow. I don't remember the name, by the way, sorry. Okay, Cuphead is a game. Should we like... Nope. Sorry. raid him or something? No, sorry. Thank With you. 2 viewers. Whoa, that was Lol. low. Okay, nice. Nice dodge, buddy. I don't know if he'll see it, but... कूल माइंड से खेलेंगे, ठीक है? ज़्यादा चांस नहीं देंगे इनको मुझे मारने की. How Okay, will you appears दे catch दिया it मैंने using chance खुद ही, Pokemon? पागल Okay. जैसे. Okay, बहुत catch. बढ़िया. Okay. नहीं यार, what am I doing? You died. बिष्णु, हेलो बिष्णु, खाना खा लो फिर एमसी खेलेंगे. यस, खाना खाते हैं. इट्स 9:52 ना यार. ये होगा यार, होगा. इजी है ये ऑफ स्ट्रीम नहीं करना मेरे को यार. आई रियली वांट टू प्ले दिस ऑन स्ट्रीम. What do we do now? Should we end the stream and start the game streams? Let's wait until 10:15, I guess. Let's work on the stream and then also wait a little bit to complete the stream basically. He's also ending his stream, so yeah. I don't think we have many choice about it. Thanks for the follow, everyone, and I hope you guys will be following more and more. I need like 50 followers in next 30 days. Please help me do it. I would be forever grateful to you. What the hell am I doing? Sorry about it, I'm just rambling right now. Okay. What is the stream together functionality? Manage goals. I'm also learning about all this like Twitch features and stuff. Okay, so you can set up only one goal at a time. Nice. I already have set up one goal. Let me do it. I would be super happy if it happens.
So I need 50 followers by the end of the year. That's one of the challenge that I'm doing right now, apart from the 365 days challenge. So I'm deep in challenges right now. I'm tired, but a lot of things to do. So I need to stay awake. I'm feeling very sleepy, to be honest. I haven't slept. I'm almost about to cry through my eyes. Still contemplating if like I should continue the stream and try to finish the video directly, or whether to like switch to gaming channel, because like gaming streams get more views, more people. Maybe eventually people will like watch me for editing as well, but for the moment I think gaming is the thing to go for if I want like more viewers and stuff. Okay, yeah, I think I'll go with the game stream next. This is it for this one. I will be editing the video. I'm not sure if I'll be streaming the complete thing. I will decide it like when I'm streaming. Basically, I stop thinking about a lot of things. Like for example, cuts. Making cuts is easy. It's like relatively very easy actually. So yeah, that's an easy thing to do on the stream. But when I'm streaming, I like my brain like doesn't work at its like full capacity to think creatively. So yeah, that's why I'm not continuing with the video editing process. Maybe slowly I'll get there. Right now like I get super confused whether to like look at the stream, manage the stream, so focus on the edit and stuff. So maybe slowly I'll get there, and maybe slowly I'll be able to like show the entire process that I have, including creating new things or creative editings and stuff. Right now I only show you guys the basic stuff. So yeah, we'll slowly progress through this and probably reach a point where like the editing streams will also be like very cool thing. Although I don't like editing, by the way, it's just a thing that I have to do, and that's why I also choose to do it on the stream, because then I won't have a reason to like deny doing it, or procrastination basically, which happens a lot, by the way. That's why I'm currently editing 1-year-old video. So yeah, personally I don't like video editing, but maybe we'll be doing it during live streams, then maybe it will be a little bit fun. And that's why I've started to like also stream the video editing process that I have, so that like it might feel a little bit better to like edit while talking to you guys, showing things to you guys. That's the only reason. Otherwise I don't think like most people are interested in video editing. In terms of course they are, not in the live stream, I think. Okay, thank you so much for joining, but I'm not sure like what next, which game.
what we'll be playing. I don't think I can like play Delta Force right now or Warzone or Valorant because I'm like very sleepy. Maybe like basic games like Jedi Fallen Survivor, just having fun. The game is very easy to play, so I think that would be a good one to like play right now. But the thing is, if people will like request something else in the midstream, then I'll have to like switch. How about trying Stalker, which is the new game? I have downloaded but I haven't played it yet. I also don't have a thumbnail for that. Let's look for it. Just the brand asset and figure out if like we can do something. Stalker 2, right? Game assets. Also called press kit sometimes. Okay, found it. So let's look at things. Visual soundtrack, fact sheet, okay. Logo, screenshots, videos, arts, launch trailer, smoking barrels, what? Scar trailer. I don't even know what's the game here, to be honest. Is it like I have one trailer but not to like learn everything about it. Trailer 1, let's see. I don't remember what it was, to be honest. Chernobyl, I know what that is, not the game. Probably a survival game, right? Some scenes are like looking at the Dark series. I don't know which season. Yeah, that trailer does not have anything. What trailer? Made in Ukraine. The greatest temptation is trying to control something we do Reviews are not nice. fully understand. But what do we do when faced with truly inexplicable? Some tear it up to make souvenirs. Others keep it chained up inside a perimeter cage. Perhaps all the zone really needs is our compassion. Yevhen Martinenko, 25 years old. Born in a small town, loved a good book, but preferred a good fight. They took something precious from you. Yes. In your search for the truth, a you campaign had the game or not? courage to Or enter both? this zone. And then
tragedy most horrible Hopefully or a both. joy most profound? What if the scanner gets damaged in the fighting? These are not stalkers, but former monolithians. Some come to the zone to make money. Others come looking for miracles. Many just want to find happiness. A way to feel. Just enable the compressor. Sorry, it wasn't enabled before. I'm sure you can handle it. One way or another. There is nothing you can keep secret. It's just a matter of time. Nay, I'm not looking to make friends. Skiff. And if we do nothing, houses on the mainland will continue Okay, I'm guessing a survival game, but to fight us. So like open world stuff you're a little bit. fighting yourself. How about a gameplay trailer? Or how about this review thing? I think it's a review. I don't know. And we're back with another episode of Before You Buy, that show where we give you some straight up gameplay and our first impressions of the latest games releasing. As usual, it's me, Jake Baldino, and today we're talking about Stalker 2. We're finally talking about this, the follow-up to the classic PC Stalker games, after many years away and many difficult long years of development. I've been playing a review copy, and this footage is captured on PC and is spoiler-free. You're mostly seeing early game stuff because, to be honest, stumbling upon some things for the first time is half the fun, so I'm saving some of that for you. Plus, there is actually a lot of story, and there are some twists, so you won't see those here. To get into it, after such a long time from the originals, I was worried that this new Stalker would lose sight of what made the originals so special. I mean, we've seen it happen before, right? A long-beloved or classic movie or a video game, it comes back in full swing with a bigger budget. I don't own the game, by the way. It is like in Xbox Pass, like something is off, which will expire soon, and I don't want to renew. Streamlined, or I'll only play the games that I have on Steam or any other platform that I've purchased, Thankfully, basically. Stalker 2 is not one of those things. This game feels like a true follow-up Don't want to play with the subscription. PC classic, and doesn't forget where it came from. This is a gamer's game, one that challenges you and pushes you to really pay attention, This is observe, and push. I just have a trial, basically. Or really go for something ultra flashy and lacking substance. No, it seems like they didn't really compromise, and that's cool as hell. It's also messy, strange, and sometimes frustrating. Some of that, to be honest, is part of the charm. Players coming from the original game expected some of this. But unfortunately, this game takes that a bit further. Stalker 2 is coming in hot, with lots of visual and audio bugs and glitches, performance problems, and the other gameplay issues that made my playing pretty frustrating. Little things like, flickering textures, glitching characters, to worse things like getting stuck in lean mode, crashes, to immersion breaking things like NPC radio voices suddenly not having the radio static thing, so it just sounds like they're talking right next to you. And that changing from like sentence to sentence, just weird things. A lot of my play experience was rough, actually worse than you see here in this footage. I held off for a while and waited for a massive patch or update to the game that came closer to release. I hope it's better now. Played more with this, and there are noticeable improvements. So all you need to take from that is that this game is improving. Developers have been pretty upfront about very frequent sleepy. updates after launch to do and something. hot fixes all the time and stuff. So still, this is more of a review in progress for me. For most people, I recommend maybe you wait a little bit to jump into this one. This may be hard to hear if you were excited, I know, but in an age of endless games begging
begging for your time and your money. Some folks just don't have the patience for a game that is undercooked and I think I need to play We've had this something conversation again and again. like I think some folks will power slow moving through and game do okay. because I'm you don't not have to listen in the to me, mood but right now. I just wanted to give a word of warning. So no And Valorant, still, no despite the issues, Warzone, I can no still Delta Force. see Stalker 2 is a great game. Maybe this It's a or massive Jedi survival Fallen Survivor. horror-ish exploration sandbox, and the developers succeeded in. I think Jedi making Fallen the zone Survivor, now a fully that's because explorable and that game is seamless playable through world. controller. It is brutal, it's Only challenging, and controller. immersive when it's really cooking. So in this game, you are a stalker, someone who ventures into a more fantasized version of the Chernobyl exclusion zone, seeking profit. It's this like lawless land, and factions and adventurers fight and scrounge for rare Maybe you can try this, artifacts but and resources. I'm not And in too this sure about one, it. you're a voiced protagonist who is technically a rookie stalker, venturing into the zone for seemingly simple personal reasons. You're very quickly thrust into the thick of it in a pretty rough feeling intro sequence, one that I think serves to separate the player base or test you. If you get through the intro without feeling frustrated or lost and you want to see more, See, I want to then lean back and like probably relax more right likely now. to vibe with So the yeah, rest of the game. Jedi The intro Fallen is where you're Survivor either it is. gonna, like really bounce on or bounce off with some of the things they throw at you. But story-wise, I think they do. So a I'll good watch job. this later. Moment to moment, it might I've not be decided the on most that. memorable for reasons I'll. But even that in that game, like I'm stuck at some situation which I have no clue how to like progress through that. So okay, thank you so much for watching, everyone who are watching me on YouTube on video editing channel, basically not video editing channel, main channel, productive channel or work channel, which is this one, which does not got a lot of viewer. Like I said, gaming channel gets a lot of viewers and stuff, so I'll be there in a moment. And yeah, we'll be gaming there and hopefully having some fun. But I'm like very sleepy right now, and hopefully that will wake me up. I don't know. And yeah, thank you so much for watching. If you're on YouTube, please make sure to subscribe. If you're on Twitch, make sure to follow. I'm trying to reach 50 followers by the end of the year. That's one of the challenge, and the other challenge, the main challenge that I have, is to stream for 365 days straight. So yeah, if you want to become part of this journey, feel free to become one by joining us, and you can challenge yourself as well, and we can keep track on each other and pushing each other if you want. Yeah, this is me signing off on this channel, and I'll be seeing you like in a few minutes in my gaming channel. And if you're on Twitch, it's the same account. I'll see you. Have a good night, sweet dreams. Bye.